second method, that is using whole cells. That was the second approach we learned. Okay, during that second approach, what we used to do, we used to find out the concentration of solute which has entered the cell by analyzing the cell itself, right? Okay, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एनालिसिस करेंगे बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फॉर द ट्रांसपोर्टेड सोल्यूट. ओके, बट नाउ देयर इज ऑल्सो सम इश्यूज विद दिस, बिकॉज दिस इज व्हाट इट इज मेंशन, इट इज प्रेफर्ड. ये प्रेफर्ड मेथड है कंपेयर टू द सुपरनेटेंट, बट इट इज डिफिकल्ट. ये मेथड भले ही प्रेफर्ड है, इट इज difficult. Now why it is difficult? Because the estimated, we have, what we need to do, once the solute enter the cell, we have to remove, isolate the cell, and then we have to break it open and find out the concentration of solute inside the cell, right? लेकिन सबसे बड़ा डिफिकल्टी कहाँ पे आता है कि जो आप solute का ट्रांसपोर्ट स्टडी कर रहे हैं, that solute can be metabolized. अब इसका क्या मतलब है? If you take the example of glucose, so the enzymes for metabolism of glucose, metabolism means anabolism as well as catabolism. So once glucose enters the cell, immediately it is broken down into pyruvic acid, it will enter TCA cycle, it will form ATP. You cannot find solute inside the cell. Got the point what I mean? जैसे ही आपका ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर करेगा, इमीडिएटली उसका कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज ऑल द एंजाइम्स आर रेडीली प्रेजेंट. सो इफ दैट ग्लूकोज गेट्स मेटाबोलाइज्ड, it will be converted to some other product, and then you cannot find out the solute. Got it? डिफिकल्टी कहाँ पे आता है? डिफिकल्टी आता है कि आपका जो सोल्यूट जिसका आपको ट्रांसपोर्ट स्टडी करना था, यू हैव टू फाइंड आउट दैट सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दैट सोल्यूट विल बी मेटाबोलाइज्ड once it enter the cell. But this doesn't happen for all the solute. When I gave the example of glucose, why I gave the example of glucose which is readily metabolized, because ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के सारे जो एंजाइम्स होते हैं, ऑल द एंजाइम्स ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस पाथवे इज ऑलवेज प्रेजेंट, वेटिंग फॉर ग्लूकोज टू एंटर द सेल. ओके, सो हेंस यू कैन नॉट स्टडी ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट यूजिंग दिस होल सेल्स, यूजिंग दिस अप्रोच. But some solute, what happens, once that solute enter the cell, then the cell will signal to synthesize the enzymes which are required for metabolism, and then it is metabolized. So for that solute, like lactose you have studied lactoferrin, right? So lactoferrin में क्या होता है, once lactose enters, it is found to be present in the media, only then the genes for metabolism are activated. So there are different, but what happens is, if the solute is metabolized, then the whole experiment goes waste, because you are not going to find out any concentration of the solute inside the cell. Okay, so that is the major problem here. So now there are certain techniques. ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सोल्यूट मेटाबोलाइज हो जाता है, वो ब्रेकडाउन हो जाता है. For overcoming this issue, we have various techniques. Okay, and these techniques are also found out by various scientists who are working on solute transport. The basically method which ऐसा होता है कि we have to prevent the metabolism of the transported compound. हम ऐसा कुछ तो करेंगे जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो अपना ट्रांसपोर्टेड सोल्यूट है, ट्रांसपोर्टेड कंपाउंड है, इट विल नॉट बी मेटाबोलाइज्ड और इट विल बी प्रिवेंटेड. दैट मेटाबॉलिज्म ऑफ दैट सोल्यूट विल बी प्रिवेंटेड. तो उसके लिए कौन से टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं? द फर्स्ट टेक्निक, ओके, नोट डाउन. फर्स्ट टेक्निक इज मेटाबॉलिक पॉइजन, यूजिंग मेटाबॉलिक पॉइजन. ओके, now what is metabolic poison? Metabolic poison are those compounds, they will prevent metabolism. Simple. Poisons का मतलब you all know, right? Something which is going to break or destroy something, right? So this metabolic poison is going to destroy metabolism of the solute that we are interested in. ठीक है, हम जो solute interested है, जिसका solute ट्रांसपोर्ट स्टडी करना चाहते हैं, वो सोल्यूट के साथ हम क्या करेंगे, वी विल ऐड दिस मेटाबॉलिक पॉइजन, जिससे क्या हो जाएगा, दैट पर्टिकुलर सोल्यूट विल नॉट गेट मेटाबोलाइज्ड. सो एग्जांपल है,
ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट आपको स्टडी करना है यूजिंग एस डेरिवेटिव. In the medium you will add glucose because that is your solute, as well as you will add iodoacetate. Note down this, iodoacetate. This is an example of metabolic poison. You can have it in objectives. So एक metabolic poison का example है iodoacetate. You can add this iodoacetate along with glucose to study the glucose uptake by S cerevisiae. And you can see glucose will enter the cell, but what happens, this metabolic poison will not allow your glucose to get metabolized. So the problem क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसा है कि जब भी हम ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट स्टडी करेंगे या फिर कोई भी सोल्यूट का ट्रांसपोर्ट स्टडी करेंगे, जैसे ही वो सोल्यूट सेल के अंदर चला जाएगा, ओके, जैसे ही वो सोल्यूट सेल के अंदर जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इट विल गेट ब्रोकन डाउन, उसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा, इट विल गेट ब्रोकन डाउन, एंड देन यू कैन नॉट फाइंड दैट सोल्यूट इनसाइड द सेल, राइट. सो फॉर प्रिवेंटिंग दैट यू हैव द वेरियस मेथड्स टू प्रिवेंट मेटाबॉलिज्म. ऑफ दैट द फर्स्ट मेथड इज टू यूज मेटाबॉलिक पॉइजन. मेटाबॉलिक पॉइजन क्या होते हैं, यू कैन यूज इट अलॉन्ग विथ सोल्यूट. सोल्यूट के साथ हम यूज करेंगे. अब यहाँ पे एग्जाम्पल जो था, वी आर यूजिंग S cerevisiae for studying glucose, right? So when you study glucose uptake, glucose के साथ हम क्या ऐड कर देंगे, ये iodoacetate ऐड करेंगे. This iodoacetate is going to act as a metabolic poison. मतलब ग्लूकोज का अपटेक में कोई इशू नहीं है, ग्लूकोज will enter the cell but it will not get metabolized, means it will not get broken down. So what iodoacetate will do, iodoacetate will act as a poison. It will destroy all those enzymes which are ready for metabolism of your glucose, and it will prevent the metabolism of your solute. We don't have metabolic poison for all the solutes, so hence we have to also think about the another technique. So let's go to the second technique now. The second technique is to use mutant strains. स्ट्रेन्स मतलब टाइप ऑफ अ बैक्टीरिया, ओके. म्यूटेंट मतलब उसमें कुछ म्यूटेशंस है. तो सेकेंड टेक्निक इज टू यूज म्यूटेंट स्ट्रेन. नाउ व्हाट वी विल डू इज, दिस म्यूटेंट, इंस्टेड ऑफ यूजिंग नॉर्मल ई कोलाई, वी विल यूज अ म्यूटेंट स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई, जिसमें वो जो मेटाबॉलिज्म के एंजाइम से वो ब्लॉक्ड है, दैट जीन इज एब्सेंट, ओके. सो दैट पर्टिकुलर से एग्जाम्पल देखेंगे तो वी कैन स्टडी गैलेक्टोज transport in E. coli using the mutant strain, because this mutant strain do not have the ability to synthesize galactokinase. The galactokinase है ना, ये enzyme है which is the first step of galactose metabolism. galactose जैसे ही सेल के अंदर जाता है, for its breakdown the first enzyme which you require is galactokinase. So हम क्या करेंगे, galactokinase is present inside the cell, so once गैलेक्टोज सेल के अंदर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, गैलेक्टोज ब्रेक हो जाएगा, उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा एंड उसका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा. सो वी डोंट वांट दिस. सो व्हाट वी विल डू, वी विल यूज एन ई कोलाई सेल व्हिच इज अ म्यूटेंट, व्हिच इज हैविंग ए म्यूटेशन, जिससे वो गैलेक्टोकाइनेज को सिंथेसाइज नहीं कर सकता. व्हेनेवर यू सी काइनेज, थिंक अबाउट फॉस्फेट. व्हाट काइनेज डज, काइनेज इज गोइंग टू ऐड फॉस्फेट टू द सबस्ट्रेट. व्हाट काइनेज विल डू, ऐड phosphate to the substrate. ठीक है. now यहाँ पे see what is the substrate, galactokinase, मतलब this enzyme is going to add phosphate to galactose, and metabolism का सबसे पहला step होता है to add phosphate, and addition of phosphate is called as phosphorylation. So there needs to be a phosphate donor, right? And here the phosphate donor will be a molecule which is having 3 phosphate, so it is ATP molecule having 3 phosphate, adenosine triphosphate. So what the kinase enzyme will do, kinase enzyme is going to take phosphate from ATP and add it to the substrate. The third technique is using non-metabolizable solutes. The third technique is to use non-metabolizable solutes. Now what is this non-metabolizable solute?
सिंपल सा है, वो सोल्यूट ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा जिसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल हैव योर alpha methyl glucoside. Note down this example. This is also a non-metabolizable solute. It has been used in studies on glucose transport. So instead of using glucose, what we will do? We will use alpha methyl glucoside. This particular molecule is going to be transported exactly like your glucose, but it is not metabolizable. मतलब उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता. What was the problem? When glucose was entering the cell, it was immediately metabolized. जब ग्लूकोज सेल के अंदर आता है तो इमीडिएटली उसका ब्रेकडाउन हो जाता है. लेकिन अगर आपने इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज इफ यू यूज अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड, then what will happen? It will not get metabolized. But you can study the solute transport because it is going to get transported exactly like your glucose. Similarly, for studying with yeast, अगर आपको ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट स्टडी करना है ईस्ट के साथ, so instead of glucose you can use glucosamine, you can use galactose or you can use sorbose. So these are the alternatives. So instead of using glucose, हम यूज करेंगे कुछ ऐसा सोल्यूट जो ग्लूकोज जैसा ही रहेगा लेकिन वो नॉन मेटाबोलाइजेबल होगा, यानी कि उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता, उसका ब्रेकडाउन नहीं हो सकता. सो एग्जांपल इज अल्फा मिथाइल ग्लूकोसाइड इन बैक्टीरिया एंड ग्लूकोसामाइन, गैलेक्टोज एंड सोर्बोस इन यीस्ट. द नेक्स्ट वन इज नॉन मेटाबोलाइजेबल एनालॉग्स. नॉन मेटाबोलाइजेबल analog. So we can use this non-metabolizable analog for experiments on amino acid transport. Okay, amino acid transport करने के लिए हम यूज करेंगे. See here non-metabolizable solutes में जो हमने ग्लूकोज की जगह पे जो बाकी चीजें यूज किए, it was similar to glucose, like it all these were sugars or sugar derivatives, right? But for studying amino acids, if you want to study amino acid transport, अगर आपको amino acid का transport study करना है, so you will use another compound called as 2-amino isobutyrate. So non-metabolizable solute and non-metabolizable analog is having the same function, they are one and the same. Difference है कि हमने solute लिखा था जब हम ग्लूकोज की बात कर रहे थे and हमने analog लिखा जब हम amino acids की बात कर रहे हैं.